and hi everyone. This is Simran Priya and I welcome you back to my channel. Today we will be discussing ICSE History of Class 7 and this is presented by me. Okay, so today's discussion is on chapter number 2, that is Spread of Christianity. We have already done the rise of Christianity. Now we will see that how this particular religion spread all over the world. Okay, moving forward, we will be having an overview about this chapter. Then we will be discussing emperors of Constantine and the medieval Europe and what were the major changes during this period that came in the medieval Europe. Okay, so I would like to welcome all and I would like to say hi to Janvi Tiwari, Anand Saurav, hi, Kumar, hi, Nirmal Kumar, I am welcoming all of you, Artsy Live, hello, thank you so much for joining in. Okay, so as you know, before starting my session, let me introduce myself first. So my name is Simran Priya. I have done my graduation and my master's from Delhi University. Currently, I am teaching in an ICSE school that is Carmel School. Yes. Okay. So can you please let me know that am I audible and visible to all of you or not? So okay. Now let's move forward. Now let's start the chapter with the very basic, that is introduction to this chapter. In this chapter, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्या करा था बच्चा, हम लोगों ने पहले करा था rise of Christianity, that how this particular religion rise करता है, how Jesus Christ was crucified, and after the crucifixion of Jesus Christ, this religion did not die off, but people started preaching the teachings of Jesus Christ. Okay, so we will learn here. Yes, thank you so much every one of you. Thank you so much for joining in. Thank you so much for letting me know. Yes, I am audible. Okay, I would like to welcome Anupriya Raj and Anand Saurav, all of you. Also, okay, Anand Saurav is Tanmay Anand. Thank you Tanmay for joining in. Okay, so हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि किस तरीके से आखिर Christianity religion spreaded itself. Okay, so the spread of Christianity was a major development during the medieval time. We have already learned how history is divided into three periods or three eras, that is ancient, medieval and modern. Now this particular religion, Christianity, किस era में आती है या किस period में आती है? It came during the medieval period. ठीक है? And it had a major developments that happened in this particular religion कि वो कब होता है? Medieval period में ही होता है. Okay. Now Christianity was a religious faith based on life and teachings of Jesus Christ. We have already dealt with this, bacha, that this entire religion was based on what? It was based on the life of Jesus Christ and also what he teached to his disciples. So all the life and all the history about his life and the teachings of Jesus Christ are the foundation on which this particular religion is spreading itself. Okay, so आगे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी जानते हैं these are the very basic things that we are doing in the introduction, that Bible is the holy book of Christian. So holy book क्या है बच्चा? Christianity का बाइबल है. जैसे कि इस्लाम का होली बुक इज कुरान, वैसे ही क्रिश्चियंस का होली बुक इज बाइबल. ओके, दैट इज द रिलीजियस बुक दैट दे कंसिडर्ड वेरी प्योर एंड सेक्रेड टू देमसेल्फ. ओके, नाउ दिस बाइबल हैज बीन डिवाइडेड और इट हैज टू पार्ट्स. ठीक है, इस बाइबल का क्या है? दिस बाइबल हैज टू पार्ट्स. अंडरस्टूड? ओके. Okay, and can I know from any one of you or all of you can give me a thumbs up that am I audible or visible to you? So please give me a thumbs up and please let me know that yes, I am audible or not. Okay, because I can see some of the message floating that ma'am when you will join, but I have already joined in. So please let me know that I am audible or visible to you or not. Okay, so ये Bible जो है, ये Bible का दो parts है. It has two parts. One is the Old Testament of Bible and the second is the New Testament of Bible. Okay, बहुत basic है.
पहला आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? क्रिश्चियनिटी मीडिएवल पीरियड में मेजर डेवलपमेंट्स दिखाती है। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा रिलीजियस फेथ है जो किस पे बेस्ड है? जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ और टीचिंग पे बेस्ड है। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस एंड इट हैज टू पार्ट, दैट इज द ओल्ड टेस्टामेंट and the New Testament of Bible. Okay, now Christianity did not fade away with the crucifixion of Jesus Christ. Now this is an important question, that why exactly? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पूरा का पूरा ये धर्म जीसस क्राइस्ट की लाइफ और टीचिंग्स पे बेस्ड है. So why did Christianity, this particular religion, did not fade away or it did not die off after the crucifixion of Jesus Christ? जब जीसस क्राइस्ट चले गए थे तो उनके बाद भी ये रिलीजन कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे ये लोगों का विश्वास जीतता रहा? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, now, I have answered this already. I will repeat once again ki why so? Because people started believing that Jesus Christ has not died, but he has arose from the dead and he has proceeded to the heaven. ओके, इन लोगों का क्या विश्वास था? जीसस क्राइस्ट की मृत्यु नहीं हुई है क्रूसिफिकेशन के बाद, बल्कि वो मृत्यु से उबरकर वो हेवन में चले गए हैं. ओके, नाउ दिस वाज द बिलीफ ऑन विच दिस क्रिश्चियनिटी रिलीजन, इसने लोगों में एक विश्वास जगाई कि नहीं जी, अभी भी हमारे ऊपर ईश्वर का हाथ है. So they started, the disciples of Jesus Christ started preaching these religion, okay, to the other people, and that's how this religion proceeded, and it continued till today. Okay, so now after Jesus died, his teachings were spreaded by his followers. Who spreaded his teachings? His followers spreaded the teachings of the Jesus Christ, and the two major, or you can say two notable followers were Saint John and Saint Paul. Okay, दो notable या फिर दो okay, ओके, सो दो नोटेबल या फिर दो मेजर फॉलोवर्स कौन थे जिन्होंने इसकी टीचिंग्स को बढ़ाया? सेंट पॉल एंड सेंट जॉन. इसमें से सेंट पॉल हैड एन एक्टिव रोल इन स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर. ओके, सो हम लोग इसमें देखेंगे कि जेरूसलम में वो थे, नजारत में वो पले बड़े, वहां से किस तरीके से this particular religion had a very intense, deep-rooted hold in the Roman Empire. And you know that Roman Empire एक ऐसा साम्राज्य था that was spread to 3 continents. Roman Empire, मैंने आप लोगों को ये पहले भी डिस्कस किया बच्चा कि Roman Empire कैसा था. Roman Empire was a very large empire जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पार्ट्स में, ये 3 कॉन्टिनेंट में ये फैला हुआ था अंपायर. ओके, सो क्रिश्चियनिटी ने अपना स्प्रेड या अपनी होल्ड कहां पर बनाना शुरू किया? रोमन अंपायर से शुरू किया. Okay, now Saint Paul was the first to encourage non-Jewish to become Christians. उन्होंने क्या किया? He was the first person, he was the first followers जिसने क्या किया? Non-Jewish people को Christianity में convert करने के लिए motivate किया और उन्हें बोला कि आप लोगों को Christianity अपनाना चाहिए. Okay, moving ahead, the spread of Christianity in the Roman Empire invited the wrath of the rulers. Now, what happened? जब क्रिश्चियनिटी रोमन अंपायर में घुसती है, जब क्रिश्चियनिटी अपना होल्ड रोमन अंपायर में बनाने की कोशिश करती है बच्चा, so that was not acceptable and that was not wholeheartedly welcomed by the rulers of the Roman Empire. You are getting me? कि रूलर्स जो थे रोमन अंपायर के, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरा ऐसा अपने बाहें फैला के उन्हें नहीं ऐसा अंदर आने दिया, बल्कि उनका स्प्रेड जब रोमन अंपायर में हो रहा था, दैट मेड द रूलर्स वेरी एंग्री. उन्होंने क्या किया? इनवाइटेड द wrath, मतलब इनवाइटेड, उन्होंने उन रूलर्स को बहुत क्रोधित किया. ओके, नाउ सम ऑफ द एम्पायर्स सच एज नेरो एंड डियोक्लेटियन, ये दो रूलर्स थे that saw Christian people as rebels. What do we mean by the
Yes, what do we mean by the word rebel? Nirmal Kumar Jhanvi Tiwari, wrath means krodh, wrath means anger. That invited the anger of the rulers. That invited कि rulers उनके आने से खुश नहीं थे, उनकी नाखुश, वो बहुत नाखुश थे और ये चीज हमें दिखती है. कैसे दिखेगी? अभी I will say. Now, कुछ रूलर्स रोमन एम्पायर के जैसे कि नेरो एंड डियोक्लेटियन, इन लोगों ने क्रिश्चियंस को दे सॉ देम एज द रेबल. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड रेबल? रेबल मीन्स वो लोग जो बगावत करते हैं, वो लोग जो अपनी आवाज एक अथॉरिटी के खिलाफ उठा देंगे. सो दोज पीपल आर द रेबल पीपल हु विल रोज देयर वॉइस, और जो लोग बगावत करेंगे. ठीक है. सो उन्होंने देखा कि ये क्रिश्चियन पीपल कैसे हैं, ये लोग ऐसा पीसफुल लोग नहीं है, बल्कि ये लोग रेबेल्स हैं, ये लोग बगावत कर सकते हैं अथॉरिटी के खिलाफ, बिकॉज दे रेफ्यूज टू वर्शिप रोमन गॉड. और इनके गुस्सा होने का मेन कारण था क्योंकि इन क्रिश्चियंस ने दे बिलीव्ड इन जीसस क्राइस्ट एंड द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट? सो दे रेफ्यूज द वर्शिप ऑफ रोमन गॉड. उन्होंने पूरी तरीके से रोमन गॉड के वर्शिप को खारिज कर दिया, जिसके वजह से this was not acceptable by the Roman emperors. Okay, now this led to what the Roman emperor became very cruel, and they started arresting, torturing and killing the Christian people. Okay, so इस चीज के वजह से लोगों ने तो इसके वजह से क्या हो गया बच्चा, लोगों के बीच में बहुत एक अविश्वास फैल गया और रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस लोगों को ना केवल अरेस्ट किया बल्कि दे टॉर्चर्ड देम एंड मेनी एंड थाउजेंड्स वर किल्ड. ओके, मूविंग अहेड, नाउ कम्स एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन. This was an emperor of the Roman Empire. This is a statue of Emperor Constantine. Now हम लोग जानेंगे कि how this emperor, being a Roman emperor, how he welcomed Christianity. Okay. Now, persecutions of the Christians ended in the 4th century CE. What do we mean by persecution, bacha? Persecution means what? The ill behavior or the ill treatment or the exploitative treatment that is given to the other person based on certain political, religious या race belief. आप समझो इस बात को. इसका मतलब परसिक्यूशन मतलब क्या होता है, जब आप किसी से सलूक से पेश नहीं आते हो, आप किसी के साथ बहुत बदतमीजी करते हो या फिर उसे आप टॉर्चर कर रहे हो, आप उसे किल कर रहे हो. क्यों? क्योंकि वो दूसरे समुदाय से है, कम्युनिटी से है, दूसरे धर्म से है, दूसरे रेस का है, या फिर दैट पर्सन हैज अ डिफरेंट पॉलिटिकल बिलीफ. ओके, जैसे कि हो सकता है कि you are a believer of a right wing, the other person can be a believer of the left wing or a central. So अगर आपके खिलाफ कोई आप दूसरा बिलीफ रखता है तो आप अगर उसके साथ not आप लेकिन अगर कोई उसके साथ ill behave करता है, that is persecution. And the same was Roman Empire is doing with the Christians, है ना? क्योंकि क्रिश्चियंस क्या थे, क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट को मान रहे थे, रोमन एम्पायर चाहते थे कि रोमन गॉड्स को भी वो पूजे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो they tortured them, they arrested them and they also killed many of them, right? So this particular persecutions of the Christian ended in around 4th century CE. Yes, so ये कब होता है, 4th century CE में ये खत्म होता हुआ दिखता है. When the emperor Constantine became the first Roman emperor to embrace Christianity. What do we mean by the word embrace, bacha? That he was an emperor who for the first time, he was a Roman emperor who for the first time accepted Christianity. He was not against Christianity, rather he wholeheartedly embraced it. Okay, उसने accept किया कि yes, Christianity is a religion and we must work towards the spreading of the Christianity. So हालांकि ये रोमन एम्पायर थे, लेकिन तब भी इन्होंने embrace किया Christianity को. Who was this emperor? This may be a this may be an important question. The Emperor Constantine, Okay, moving ahead. Now he took
several steps. Na केवल he embraced Christianity, but he took several steps to spread Christianity. उन्होंने ना केवल क्या किया, ना केवल इसे embrace किया, accept किया, बल्कि he took several steps लिए ताकि वो क्या कर पाए. Okay. Okay, so here I can see some people are asking that race means color of skin. No, bacha, race does not only means color of skin. Race का मतलब सिर्फ color of skin नहीं होता है. Race का मतलब होता है कोई भी physical identity या physical trait आपका, कोई भी physical identity या physical features आपका दूसरे से अलग है. Like some people have smaller eyes, some people have bigger nose, some people have a broader lip, some people have a thinner lip, some people have a curly hair. So ये जो सारे physical attributes है, including color of a skin, that some people are darker than the other people, this is included in race. So we must never distinguish between people, और हम लोगों को ऐसा discriminate नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में based on the race, that what color of skin or what kind of nose, lips, ears and eyes do they have, but we must respect each other on the base of humanity, that we all are humans, right? Okay, thank you so much. Now he also spreaded Christianity. I would like to welcome Neetu Jadodia. Thank you so much, Neetu Jadodia. She is Anjali, so thank you so much, Anjali, for joining in. Now, उन्होंने क्या किया, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने स्प्रेड किया क्रिश्चियनिटी को. किस तरीके से? ही डिड 4 स्टेप्स, 4 चीजें उन्होंने करी स्प्रेड करने के लिए कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियनिटी को. फर्स्ट, ही ग्रांटेड क्रिश्चियन फ्रीडम टू वर्शिप. उन्होंने क्या दिया? फ्रीडम दिया, दैट द क्रिश्चियंस कैन वर्शिप whoever they want to, they can practice their own religion. ये फ्रीडम दी उन्हें. Now he gave important jobs to Christians. उन्होंने Christians को important administrative jobs में भी रखा, higher authority में भी साइन किया. Now ग्रांटेड मतलब बच्चा देना, ग्रांटेड मतलब देना, ग्रांट करना किसी को, कि आपने जैसे कि कैन यू प्लीज ग्रांट अ परमिशन टू मी. ग्रांट परमिशन मतलब करना, किसी भी परमिशन या फ्रीडम के पहले हम लोग उसको नहीं, कैन यू गिव मी अ परमिशन, नहीं, वी विल नॉट यूज दैट कैन यू गिव मी अ परमिशन, वी विल से कैन यू ग्रांट मी अ परमिशन. ओके, सो इसका मतलब भी देना होता है. नाउ he also gave important jobs to the Christian and declared Sunday. Sunday को उन्होंने public holiday बना दिया. क्यों? क्योंकि ताकि लोग संडे को फ्री रहे और they could go and attend churches. Okay. Now the fourth is he also built many churches. इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारी churches को बनाया. Okay. Now comes shift of capital. ठीक है, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्या क्या किया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हम लोगों ने लर्न किया. पहला, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने एम्ब्रेस किया क्रिश्चियनिटी को, प्लस उसके स्प्रेड में उन्होंने क्या किया, सेवरल स्टेप्स लिए, जैसे कि संडे को हॉलीडे बनाना, इंपॉर्टेंट जॉब्स में उन्हें असाइन करना, फ्रीडम ऑफ वर्शिप देना और चर्चेस बनाना. ये सारी चीजें उन्होंने करी. नाउ कम्स द शिफ्ट ऑफ द कैपिटल. नाउ व्हाट विल हैपन, कॉन्स्टेंटाइन इटसेल्फ, कॉन्स्टेंटाइन अपना एम्परर खुद से क्या करेंगे, रोम से कैपिटल को शिफ्ट करके कॉन्स्टेंटिनोपल ले आएंगे बच्चा. ओके, नाउ व्हाट इज द, ये जो आपको सारा पेंटेड एरिया दिख रहा है, ये जो ग्रीन से आपको पेंटेड दिख रहा है, यहां से ये पूरा क्या है, दिस एरिया was what, this area was the Roman Empire. और आप देख सकते हो अब ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप, this is Asia and this is Africa. So this was such a large empire. Okay, यहीं पर earlier the capital was at Rome, but later on he shifted the capital to
Byzantine, ancient city of Byzantine. Byzantine की ancient, यहाँ Byzantine की ancient city में उन्होंने इसको shift कर दिया. And this new capital was known as Constantinople, जिसको इन्होंने अपने नाम पर रखा Constantinople. Why, bacha? Okay, Janvi is asking why he declared Sunday as a holiday. Sunday को क्यों holiday किया? ताकि बच्चा उस दिन लोग जाकर churches को attend कर पाएं. They could go and worship. That was a free day. जो एक holiday दिया ताकि आप जाकर holy काम कर पाएं. आप pure आप अपने religion में अपने आप को devote कर पाएं. Okay. Now, moving ahead. Yes, very good, Neetu Jarodia, so that people can attend church. Now, because he believed Roman Empire too big to be administered efficiently, और इनका मानना था कि that Rome से पूरे Roman Empire को administer करना was very difficult. So he shifted the capital to Constantinople, that is the उस time का ancient city of Byzantine. इस कॉन्स्टेंटिनोपल को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? We call it Istanbul. इस्तांबुल के नाम से जानते हैं बच्चा. So this new capital was called as Constantinople. Okay. Now Constantinople became a major commercial center. हाँ, और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद this became a major commercial center, जहां से अलग अलग commercial activities होंगी, traders आएंगे, trading activities होंगी. So ये कॉन्स्टेंटिनोपल एक central hub बन गया, commercial center बन गया. Okay. Later Constantinople became the capital of the Eastern Roman Empire. अभी हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे कि this particular Roman Empire will be divided into two parts, that is the Western Roman Empire and the Eastern Roman Empire. So Western Roman Empire तो बच्चा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, लेकिन Eastern Roman Empire क्या होगा? Eastern Roman Empire flourish करेगा and it will be renamed as Byzantine Empire. और Eastern Roman Empire ही क्या बन जाएगा? Byzantine Empire बन जाएगा, जिसका capital will be Constantinople itself. Okay. Now, in 391 CE, one of the Constantine's successor, Emperor Theodosius, Emperor Theodosius ने क्या किया? क्या किया? Made Christianity the official religion. क्यों उसने क्या किया? इसने Christianity को. अब now understand, Constantine ने सिर्फ accept किया था इस particular religion को, लेकिन Theodosius क्या करता है? This emperor did what he made Christianity the official state religion. उसने पूरे state का वो official religion बना दिया. Okay. Why did Emperor Constantine shifted its capital? Constantine ने क्यों shift किया था बच्चा अपना capital? Because he thought कि रोम से Roman Empire बहुत बड़ा है और रोम से administer करना इतनी बड़ी empire को मुश्किल हो रही है, इसलिए उसने Constantinople बना दिया. Okay, now medieval Europe. Now in medieval Europe, we will see what? There will be various events. There will be several events that will come along. Majorly, there will be 5 events जो आते हैं. The first would be the decline of the ancient Roman Empire. पहला event क्या है बच्चा? Decline of the ancient Roman Empire. Okay, yes. Yes, very good, Anand Saurav. Yes, good afternoon, John Vic. Now moving ahead, medieval period में हमें 5 events दिखेंगे, 5 अलग-अलग चीजें होंगी बच्चा. Now the first is the decline of the ancient Roman Empire. अभी मैंने आपको बोला Roman Empire टूट के 2 पार्ट बन जाएगा. One will be the Western Roman Empire and the second one will be the Eastern Roman Empire. ये 2 empire बन जाएगा, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे. Then there will be rise of feudalism. फिर यहाँ पर क्या होगा? Rise of feudalism होगा. Then there will be what? Then there will be rise of church as the most important institution. और फिर धीरे धीरे the power will concentrate in the church. और church एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही important institution बन जाता है. Okay.
Now, then the fourth will be the rise of Islam, जो हम लोग next chapter में करेंगे, and the last will be the Crusades. What do we mean by the word crusade? This means holy war or the wars that are fought in the names of religion. War जो in name of religion पे fought किया जाता है, धर्म के आधार पे जो युद्ध हो उसे धर्म युद्ध कहते हैं. That is crusade. Okay, religious war. Now I will discuss this decline of ancient and the rise of feudalism, where I will also discuss feudalism क्या है बच्चा. Feudalism एक rough idea आप ले लो. Feudalism is what? Feudalism is when the society is क्या है, सोसाइटी में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है जहां पर जो सबसे ऊपर है वो कम नंबर में है, द नंबर्स आर कम, द नंबर्स आर लेस एंड दे हैव द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर. जैसे कि सबसे ऊपर में किंग बैठे हैं, उसके नीचे में नोबल्स बैठे हैं. आप अगर इस जगह को देखो, छोटा जगह है, नोबल्स के किंग के बाद किसके पास पावर रहती है, नोबल्स के पास. फिर उसके नीचे में नाइट्स उससे ज्यादा है, उसके पास पावर होती है. सबसे ज्यादा पीजेंट्स हैं तो सबसे नीचे पीजेंट्स होते हैं. सो व्हेन देयर इज अ हायरार्की इन द सोसाइटी एंड व्हेन द किंग और देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर, दैट इज फ्यूडलिज्म. Okay, moving ahead. Now let's discuss the decline of the ancient Roman Empire. Ancient Roman Empire के decline को करते हैं. That around 200 CE Roman Empire began to decline. ये बच्चा बहुत इतना बड़ा empire क्या होगा, decline हो जाएगा. और इसके chief causes क्या होंगे, the major causes will be corrupt rulers. Rulers क्या हो जाएंगे, corrupt हो जाएंगे. That they will be, वो बहुत भ्रष्टाचार करेंगे. They will be trying to earn their own profit at the expense of the people, right? लोगों के हित के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे, but they will try to make their own fortune out of it. So they will become corrupt rulers. Frequent outbreak of the civil war. Civil war क्या होता है बच्चा, civil war is the war that is fought among us one another, among the people of one country. So among a citizen of a country, जब हम among each other अपने में ही जब हम war करने लगते हैं, जैसे कि अगर इंडिया है तो इंडिया के लोग आपस में ही war करने लगे in order to rise in power, so उसे civil war कहते हैं. और जब दो अलग अलग कंट्री या 5 अलग अलग कंट्री अपने में इन्वॉल्व होती है वॉर में, so that leads to a war or a world war. ठीक है. So ये क्यों डिक्लाइन हो रहा था, some of the causes are कि corrupt rulers थे, then we had frequent outbreak of the civil wars. Now infighting amongst the soldiers. Now soldiers were also doing what, they were fighting among themselves, okay, etc. Among all these, the chief cause of the decline, if I ask you the major cause or the most important cause or the chief cause, वो क्या था, the attacks by the Germanic tribes. जर्मैनिक ट्राइब्स जो थे उन्होंने क्या किया, रोमन अंपायर पे बच्चा अटैक्स किया. ठीक है, आप यहाँ पर इस मैप में देखो. नाउ सम ऑफ द नेम्स आर विशिगॉथ्स, Ostrogoths, Vandals and Franks. So Visigoths, Ostrogoths, Vandals and Franks were some of the Germanic tribes. जो क्या करते हैं, आप देखो यहाँ से Ostrogoths क्या करेंगे, यहाँ से वो रोमन अंपायर में घुसेंगे और वो अंदर की तरफ इटली में आते हैं, फिर वो स्पेन की तरफ जाते हैं. So these people are entering inside the Roman Empire and they are trying to capture those places. Now we had Visigoths here. We had Visigoths, okay. Then we also had Vandals. Vandals हमें यहाँ पर मिलते हैं. And then we also had Franks. ठीक है, हमें फ्रैंक्स भी यहाँ पर मिलते हैं. सो ये लोग अलग अलग जगहों से क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ऊपर में रोमन अंपायर हमारा कहाँ पर है, दिस एरिया वाज द रोमन अंपायर. ठीक है, और आप देखो कि अपर एरिया से वो लोग जर्मैनिक ट्राइब्स अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है. ओके,
Okay, now moving ahead, the Romans named them or called them barbarians. ये जो Germanic tribes थे बच्चा, Germanic tribes को Romans ने क्या बोला? That they are barbarian, they are animal-like, they are not the civilized people. Okay, ये बिल्कुल भी civilized लोग नहीं हैं, ये लोग क्या हैं? ये लोग animal-like हैं. Okay, they plundered the treasures, killed and enslaved many Romans. इन्होंने क्या किया था? उन्होंने treasures को plunder किया था. They killed and enslaved many Romans. उन्होंने मारा और बहुत सारे लोग रोमन्स को अपनी बंदी बनाकर ऐसा स्लेव बनाकर वो अपने साथ ले जाते हैं. कौन ले जाते हैं बच्चा? जर्मैनिक ट्राइब्स जब ये रोमन एम्पायर में एंटर करते हैं, सो ये ना केवल यहाँ पर लूटमारी करते हैं बल्कि दे ऑल्सो किल्ड दोज पीपल एंड मेड देम स्लेव्स. Okay, now the final blow, जब सबसे एक final blow आता है. Okay, yes, when they lose their freedom of life also, जब वो अपने लाइफ पर उनका खुद का कोई फ्रीडम नहीं है, खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, आप किसी के अंडर में वो जी रहे हैं, किसी के मोहताज हैं, सो वो लोग क्या हो जाते हैं? स्लेव बन जाते हैं. ठीक है. फाइनल ब्लो आता है 476 में जब एक बारबेरियन चीफ नेम ऑल्डोर्सर ने अपने आप को किंग ऑफ इटली बना लिया. जो सबसे झटका लगता है, सबसे फाइनल झटका लगता है, जिसके बाद दिस एम्पायर केम टू अ डिक्लाइन वाज जब बारबेरियन चीफ ऑल्डोर्सर ने अपने आप को इटली का एम्पायर बना लिया और वहां के जो रोमन एम्पायर थे उन्हें फोर्स किया दैट ही मस्ट गिव अप हिज क्राउन. यू कैन सी दिस इन द पिक्चर इटसेल्फ. आपको यहाँ पर ये देख रहे हो, ये प्लेट में द पर्सन इज ऑफरिंग द क्राउन. ये आप देखो, ये क्राउन है बच्चा, and this is ऑल्डोसर. ऑल्डोसर क्या कर रहा है? ये पर्सन जो लास्ट रोमन एम्पायर था वो ऐसे थाली में करके ऐसे प्लेट में उसे अपना क्राउन ऑफर कर रहा है. सो यू कैन सी दिस दैट दिस बारबेरियन किंग डिड व्हाट. उन्होंने लास्ट रोमन एम्पायर से ये ले लिया और इटली का खुद को राजा बता देते. ओके, नाउ मेनी हिस्टोरियंस कंसिडर दिस एंड ऑफ द रोमन एम्पायर. बहुत हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये क्या है? ये एंड ऑफ द रोमन एम्पायर है. बाय अराउंड 500 CE के अराउंड बारबेरियंस carved out their own independent kingdoms and settled down. इन्होंने क्या कर दिया था? इसके बाद जब ये बारबेरियंस घुसे जा रहे थे जर्मैनिक ट्राइब्स रोमन में, सो लास्ट में 500 CE में they did what? They started making their own independent स्वतंत्र किंगडम अपने साम्राज्य बनाने लगे and they started settling down in the Roman region. Okay, and the largest barbarian kingdom was made by the Franks. ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स का नाम पढ़ा, उसमें से फ्रैंक्स सबसे बड़ा बारबेरियन किंगडम बनाएंगे. Okay, now what was the impact of the barbarian invasion? इस barbarian invasion का इस बारबेरियन इन्वेजन का ये ऑफ है. जानवी, आई डू नॉट नो बच्चा कि कमेंट सेक्शन ऑफ है. आई डू नॉट हैव एनी आइडिया. हो सकता है लाइव सेशन के बाद आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. एंड प्लीज अभी यहाँ पर स्टे करो, जब मैं लाइव सेशन ऑफ करूंगी तब जाकर आप कमेंट सेक्शन पे लिख पाओगे शायद. ओके, सो आई डू नॉट हैव एनी आइडिया व्हाई द कमेंट सेक्शन इज ऑफ टिल नाउ. एज यू कैन राइट मी राइट हियर. निर्मल कुमार, ऑफ कोर्स आई विल बी ब्रिंगिंग इंग्लिश वन फॉर यू ऑल्सो एंड ज्योग्राफी का सेशन भी बच्चा जल्द से जल्द आएगा. आनंद, सौरभ, yes everyone, I'm telling you, English 1 and geography I'm going to bring very soon. Please stay with me, please. I'm also working for you, so it is also I am bringing sessions regularly. So it is really hectic sometimes, but I'm trying to do my best. Okay, so please cooperate and be kind and please be as a supportive. Okay, now moving on कि इस वजह से because of the barbarian invasion, what were the major impacts? What were the major impacts जो यहाँ पर होते हैं?
ओके नाउ अब द बारबेरियन इन्वेजन, पहली चीज जो पहला इम्पैक्ट है, दिस वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन रूलर। इसने क्या किया था, जैसे ही जर्मैनिक ट्राइब अंदर घुस के रोमन्स पे अटैक कर रही है, सो जो रोमन के रूलर्स थे बच्चा, उनकी अथॉरिटी बहुत वीकेंड हो जाती है, बिकॉज दे फेल्ड टू चैलेंज दीज इन्वेडर्स। ये जो बाहर से लोग इन्वेजन कर रहे हैं, उनको ये चैलेंज नहीं कर पाए। ओके नाउ द सेकंड इज द ट्रेड डिक्लाइंड। द सेकंड वाज द that during this period what happened, the trade declined due to the violent political condition. Why it was said that this there was a violent political condition? क्योंकि there was a continuous war, civil war that was happening in the Roman Empire. लोग अलग अलग जगहों से at one subsequent एक simultaneously अलग अलग फ्रंट से लोग अटैक कर रहे हैं, so वहां के political situation got upheaved and this led to the trade decline. So trade नहीं flourish हो पा रही थी, trade decline होता है, and the last is third is that this led to the rise and spread of feudalism. See, ठीक है, it ये क्या होता है, ये राइज और स्प्रेड करता है फ्यूडलिज्म का। ओके 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 बच्चा, आई विल सून बी अपडेटिंग द, मैं जल्द से जल्द आपको एक कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, वेयर आई विल बी अपडेटिंग द टाइम टेबल दैट व्हेन एंड ड्यूरिंग व्हाट टाइम आई विल बी कमिंग अप विद योर सेशन, सो दैट आप भी अपडेटेड रहो एंड मेरे लिए भी इजी हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग मी दैट। ओके नाउ द सेकंड थिंग जो सेकंड इवेंट है in the medieval Europe was the rise of feudalism. अभी मैंने आपको बताया feudalism is what? Feudalism is a pyramidal structure where the power is divided hierarchically. ठीक है, power कैसे divided है? Hierarchy में divided है. Okay. After the fall of the Roman Empire, when the Roman Empire came to an end in the 5th century CE, very few kings in Europe could afford to maintain a standing army. समझो बच्चा, very easy, you do not have to learn this through, you just need to understand the concept of feudalism. ठीक है, सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है. This is a very stupid myth that we have to memorize the social science paper. No, we do not have to memorize and like ऐसा कि हम लोग बोलेंगे कि after the fall of the Roman Empire, after the fall of the Roman Empire, नहीं, ऐसे नहीं होता है. सारे सब्जेक्ट को we need to understand. This is a social science paper where we do what we do, our experiments, we do our observation, we dig out facts and then we present to you. So it is nothing less than a science paper. So what we must do, we must try to understand the concept and then we must try to interpret it according to us, और वो चीज आप पेपर में लिखते हो. ठीक है, जैसे कि फ्यूडलिज्म कैसे उभरता है, क्या हो रहा है? रोमन एम्पायर बच्चा पूरी डिक्लाइन हो चुकी है. ठीक है, रोमन एम्पायर पूरा डिक्लाइन हो गया. सो यूरोप में क्या हुआ, बहुत कम ही ऐसे राजा थे जिनके पास इतनी रिसोर्सेस थी, दे कुड अफोर्ड, दैट मींस दे हैड दिस मनी और द रिसोर्सेस टू मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी. एक हमेशा एवर रेडी स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करना was not possible for all the kings. So उन्होंने क्या किया? They did what? The kings granted portions of the lands to the nobles. सबसे ऊपर में मैंने आपको क्या बताया, किंग्स बैठे हैं लेकिन किंग्स आर्मी नहीं मेंटेन कर पा रहे. लेकिन अगर वो किंग है, उसको अपने टेरिटरी को बचाना होगा बच्चा, इसलिए उसको आर्मी तो चाहिए, चाहे वो मेंटेन कर पाए कि नहीं कर पाए. सो उसने क्या किया, उसका पूरा कंट्रोल था लैंड पे, उसने कुछ पोर्शंस ऑफ लैंड किसको दे दिए? ही हैड गिवन सम पोर्शंस ऑफ लैंड टू द नोबल्स. नोबल्स को दे दिया कुछ पोर्शन ऑफ लैंड और उसने उससे रिटर्न में मांगा द नोबल्स प्रॉमिस लॉयल्टी, कि उसने बोली कि आप नोबल्स हमेशा किंग के प्रति वफादार रहोगे, एंड प्रोटेक्शन, एंड व्हेनेवर इट विल बी
एंड whenever there will be a need, आप क्या करोगे, आप किंग को प्रोटेक्ट करोगे, आप पूरे अंपायर को प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है. सो that's how the king became the lords. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कोर्ट में जो जज है और जो एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट्स कॉल द जज माय लॉर्ड. माय लॉर्ड मतलब यू आर माय लॉर्ड, ठीक है. यू आर इन हायर अथॉरिटी देन मी, you are at a position, you are at a position of power than me, so you are my lord. So उससे याद करो कि किंग क्योंकि अभी हायर अथॉरिटी में है बच्चा, क्योंकि ये लैंड बांट रहा है, इसने इसे लैंड दिया है ताकि ये इसकी तरफ वफादार रहे और उसे प्रोटेक्ट करे. सो किंग बिकम्स द लॉर्ड. तो किंग इसका नोबल्स का क्या बन गया, लॉर्ड बन गया. एंड द नोबल्स बिकेम्स द वैसल. और नोबल्स क्या बन गए, वैसल बन गए, जो उनको इन रिटर्न कुछ देंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन देंगे. ओके, नाउ मूविंग अहेड, द नोबल्स. अब समझो कि सबसे ऊपर कौन था, किंग था. उसने कुछ लैंड किसको दे दिया, नोबल्स को दे दिया. अब उसके नीचे हु इज सिटिंग, द नाइट्स आर सिटिंग. अब नोबल्स बच्चा क्या, नोबल्स खुद तो जाके लड़ाई करने से रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किंग ने उन्हें जमीन दी थी उसमें से थोड़ा हिस्सा उन्होंने इस ग्रुप को दे दिया, द नाइट्स. उन्होंने नाइट्स को थोड़ा हिस्सा दे दिया और उनसे कहा कि गो train yourself and get ready for the battle always. Okay, so he gave some land. कुछ लैंड वो नाइट्स को दे देता है. कौन देता है, नोबल्स देता है नाइट्स को. और इन रिटर्न वो क्या मांगता है कि आप कभी भी मैं आपको वॉर के लिए बुलाऊं, बैटल्स के लिए बुलाऊं, तो आप हमेशा आओगे, ठीक है. नाउ अब नाइट्स के लिए लॉर्ड कौन बन चुका है, नोबल्स लॉर्ड बन चुका है. और नाइट्स क्या बन गया, वैसल बन गया नोबल का, ठीक है. किंग लैंड दे रहा है नोबल को, नोबल लैंड दे रहा है नाइट्स को. समझ गए आप, तीन हायरार्की समझ गए बच्चा. सो इसी तरीके से पावर डिवीजन भी होगा इस तीनों के बीच में. नाउ कम्स द लास्ट ब्लॉक में कौन आते हैं, पीजेंट्स. और पीजेंट्स के पास अपना लैंड नहीं है. दे फार्म, वो फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे ऑन द लैंड्स ऑफ द नाइट्स एंड द नोबल्स. नाइट्स और नोबल्स के लैंड पे दे विल डू फार्मिंग एंड दे विल डू एग्रीकल्चर. ओके, एंड इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन, और उनको इन रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट द आर्मीज अटैक. Okay, hello Sneha Rani, thank you so much bacha for joining in. Okay, moving ahead, the Serbs occupied the lowest rung amongst the peasants. अब इस peasants में कौन कौन है, इस peasants में artisans है, agriculturists है, farmers है, and also there are Serbs. इसी peasant कैटेगरी में सर्व्स भी हैं. जो सर्व्स किसको बोलते हैं बेटा, सर्व्स बोलते हैं स्लेव्स को. So slaves were the poor people who occupied the lowest rung, that is the lowest position amongst the peasants. Peasants में भी जो सबसे नीचे पोजीशन पे होगा वो कौन होगा, वो होंगे serfs, that is slaves, ठीक है. Unlike peasants, serfs were bonded laborers. पीजेंट्स क्या थे, पीजेंट्स बॉन्डेड नहीं थे बच्चों. पीजेंट्स अपना भोजन के लिए, कमाने के लिए, अपना सर पे छत रखने के लिए वो खुद जाते थे और वो फार्मिंग कर रहे हैं दूसरे के लैंड पे, और उसके बदले में उन्हें वेजेस मिल रहा है. लेकिन ये जो स्लेव्स हैं ये बॉन्डेड लेबर हैं, जैसे कि इन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था, एंड लेड मिजरेबल लाइफ, एंड सो देयर लाइफ वाज वेरी पैथेटिक, देयर लाइफ वाज वेरी full of misery. Okay, now this system of granting lands in return of the services was named feudalism. So ये जो system है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जिसके थ्रू वो सर्विस एक दूसरे से मांगते हैं, वो एक दूसरे को लैंड देते हैं. किंग ने नोबल्स को लैंड दिया, नोबल ने नाइट को लैंड दिया, और ये तीनों के लैंड पे कौन काम कर रहा है, पीजेंट्स काम कर रहा है. सो एक दूसरे को वो लैंड दे रहे हैं इन रिटर्न ऑफ द सर्विस, इन रिटर्न एक दूसरे से वो लोग सर्विस मांग रहे हैं. सो that is feudalism. Okay, now today's last topic, आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है Byzantine Empire. Now during this time what happened, आप लोगों को मैं कब से बता रही हूँ, the Roman Empire was coming to an end. It was declining. Roman Empire क्या हो रहा है,
रोमन अंपायर डिक्लाइन हो रहा है बच्चा, सो इट विल स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, वेस्टर्न रोमन अंपायर एंड द ईस्टर्न रोमन अंपायर. About 395 C, the Roman Empire was split into the two, that is the Western Roman Empire and the Eastern Roman Empire. Western Roman Empire declined in the face of the repeated barbarian invasions. आपको पता है, I've shown this, that there was a continuous invasion by the Germanic tribe. क्या कर रहे थे? जर्मैनिक ट्राइब कंटिन्यूअस इन्वेड कर रहे थे, वो इन पे कंटिन्यूअस अटैक्स कर रहे थे फ्रॉम डिफरेंट फ्रंट्स कंटिन्यूअसली. इस वजह से वेस्टर्न रोमन अंपायर जो था वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है. लेकिन द ईस्टर्न रोमन अंपायर कंटिन्यू टू फ्लरिश एंड दे वर नोन एज द बाइजेंटाइन अंपायर. और इसे ही क्या नाम दिया जाता है? बाइजेंटाइन अंपायर कहा जाता है. सर्वाइव फॉर अनदर 1000 years, और ये अगला 1000 years तक ये सर्वाइव करता है. ओके, नाउ बाइजेंटाइन अंपायर का भी कैपिटल कौन था? कॉन्स्टेंटिनोपल. वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस. Okay, now you can see in this particular map कि आप देखो कि ये क्या है बच्चा, ये जो लाइट कलर से मार्क्ड है आपके मैप में, यहां से लेकर ये वाला पूरा पार्ट क्या था? ये वाला पूरा पार्ट वाज द वेस्टर्न रोमन अंपायर. ये क्या है बच्चा? वेस्टर्न रोमन अंपायर है. और आप इसमें देखो कि कंटिन्यूअस अटैक्स, हमें सबसे ज्यादा अटैक्स विशिगोथ्स, वैंडल्स, कार्थेज, सबका छलोन्स, सैक्सॉन्स, फ्रैंक्स, सब लोग यहाँ पर अटैक्स कर रहे हैं. एंगल्स, जूस, वैंडल्स, हुन्स, गोथ, सब लोग यहाँ पर अटैक कर रहे हैं. इसके वजह से दिस पार्ट विल कम टू एन एंड. ये पार्ट क्या होगा बच्चा? एंड में आ जाएगा. नाउ यू कैन सी द डार्कर पार्ट. यहाँ पर आप देखो जो डार्कर पार्ट है, ओके, जो डार्कर पार्ट है यहाँ पर, दैट वाज द ईस्टर्न रोमन अंपायर. और इसका अभी भी कैपिटल क्या होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल होता है. और ईस्टर्न रोमन अंपायर को ही हम लोग बाइजेंटाइन अंपायर बोलते हैं. Okay, understood. You got this. Now, the Byzantine Empire enjoyed a strategic location. अब Byzantine Empire का अगर आप लोकेशन देखो, so ये एक बहुत suitable लोकेशन है, एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, जिसके वजह से which enable the rulers to exploit the trade routes between Asia and Europe. अगर मैं आपको फिर से let me erase the board and let me show you once again कि कैसे ये जो बाइजेंटाइन अंपायर है वो इतनी सही जगह पर बसा था कि वो क्या कर पा रहा था? इजीली वो एक्सप्लॉइट कर पा रहा था ट्रेड रूट्स को. देखो कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पर है? यहाँ पर है. ये यूरोप है बच्चा हम लोगों का, ये हमारा स्पेस यूरोप है, ये हमारा एशिया है. ठीक है, यूरोप को एशिया से कौन कनेक्ट कर रहा है? इट इज कनेक्टेड बाय कॉन्स्टेंटिनोपल. कॉन्स्टेंटिनोपल कनेक्ट कर रहे हैं ना. सो कॉन्स्टेंटिनोपल में क्योंकि बाइजेंटाइन अंपायर बैठ गई, सो यहां से जो भी ट्रेड हो रहे थे वो इसके थ्रू पास हो रहे थे. सो दे डिड व्हाट? दे एक्सप्लॉइटेड इट. दैट मींस वो उस पर टैक्स लगा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से उसमें टैक्स लगा रहे हैं. ओके, yes Nirmal, I will bring the question answers also for you, so do not worry about that Nirmal. Okay, moving ahead, under able rulers such as Justinian I. Now remember this name, this person Justinian I ने क्या किया? बाइजेंटाइन अंपायर को सबसे वेल्थीएस्ट अंपायर बना दिया. कैसे बच्चा? यूरोप और एशिया, हमेशा से आप जानते हो यूरोप और एशिया अपने बीच में बहुत ट्रेड करता है, because Europeans were very fond of the products that were available in Asia, the spices, the cottons, the silk, the tobaccos, all these products Europeans were very fond of. So वो लोग हमेशा continuous trade कर रहे हैं एशियन पीपल के साथ. इसके वजह से क्या होता है? बाइजेंटाइन अंपायर एक वेल्थीएस्ट अंपायर बन जाता है. Okay, now if Justinian I introduced a new system of law, वो जस्टिशियन I ने क्या किया? पहला उसने एक नया सिस्टम ऑफ लॉ लेकर आते हैं, और दूसरा इसने इस जगह पर बहुत सारे चर्चेस बनाए.
और इसमें से सबसे फेमस चर्च was Hagia Sophia. Hagia Sophia का church is the most famous church here, which is appreciated. बच्चा, this is Hagia Sophia का church, which is appreciated for its architectural beauty. ये इतना beautifully architecture बनाया गया है that this particular church is appreciated for that beauty. Now, I would like to end up my session right here, right now. Thank you so much, every one of you. Thank you so much for joining in. Thank you so much for being so kind and patient throughout my entire session. You have really made this session an energetic, full of energy. मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन को डिस्कस करने में. Thank you so much for all the insightful questions that you asked that were very that showed that आपने chapters पढ़ा है, आपको मुश्किल आई है, and you are using this platform to clear all your doubts. Okay, I really enjoyed your session, Bacha. Thank you so much. And you can do what, if you liked my video, make sure that you like it. Subscribe to this channel if you want to subscribe and stay updated about the coming updates, and also share with your friends. That is very necessary among the three, that you share with as many people as you can, so that the other people also get benefited. Okay, so that's the motto of my channel, that what we do, we guide each other towards a better world. So let's make this world a better place to live in, where we can share, we can have this kindness among ourselves, where we will help each other and we will guide each other, and let's make this a better place. Okay, moving ahead, I would like to end my session. You can always drop out your comments and your suggestions and anything that you want me to bring in the comment box itself. Okay, I will be looking up to the comment box and I will be replying as soon as possible. Thank you, Bacha. We will be meeting very soon.